Hello everybody and welcome to my channel. In this video, I am going to continue with the fourth chapter of physics, pressure in fluids and atmospheric pressure for class 9. The first lecture has been completed. This is the second lecture for this chapter. So today the first topic that we are going to look is laws of liquid pressure. We are going to study 5 laws of liquid pressure. Then the next topic that we will touch is some consequences of liquid pressure. Now from this topic you get say 2 or 3 marks of reasoning questions. In सभी questions को आज हम देखेंगे. We will study about Pascal's law today and we will study application of Pascal's law. In that we will study principle of a hydraulic machine. तो इन सारे टॉपिक्स को आज हम इस ही वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक जो है वो है लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर. हम लोगों ने पढ़ लिया कि लिक्विड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं. लास्ट वीडियो में पढ़ा था. आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. P is equal to H rho G. P is the pressure at a point in a liquid and we had derived that that is equal to H rho G. H is the height or rather the depth of the point below the free surface of the liquid. Rho is the density of the liquid and G is the acceleration due to gravity. This we have already derived, we have already studied in the last lecture, lecture 1. If you have not watched it, then watch lecture 1 first and then move ahead with lecture 2. Now today, laws of liquid pressure. There are 5 laws. The first law says, keep on writing as I'm speaking, keep on writing. Give the heading laws of liquid pressure and keep on writing. Right on. Inside the liquid, pressure increases with the increase in depth. With the increase in depth from its free surface. So if you look at this is quite simple to understand. It is what this formula is speaking, H rho G. If this H is increasing, definitely this pressure will increase. H is what? H is the depth of the point below the free surface of water. That is what is written. Inside the liquid, the pressure increases. The pressure P will increase with the increase in depth. That means with the increase in H. That is the depth from its free surface. So if I take a liquid, suppose it's a container and some liquid is there. Now if I take a point A and another point B. If you look at the diagram, point B is situated below point A. So the depth from the free surface is more in case of point B than the depth of A. That means at point B, the more liquid pressure will be there as compared to point A because the depth from the free surface is more at point B. So this is what this point says. Now second point. Point number 2. Let me clear the screen. Write down. Point number 2. Keep on writing along with me. That would be beneficial. In a stationary liquid, what is the meaning of stationary? Stationary means the liquid is at rest. N-A-R-Y, not N-E-R-Y. Okay, make the spelling correct. If you write N-E-R-Y, then this would mean stationary items like pen, pencil and all. The spelling of stationary is different in that case. In this case, it is N-A-R-Y, which means rest. So in a stationary liquid, pressure is same at all points on a horizontal plane. On a horizontal plane. This is what is the point 2 says. What it is saying, in a stationary liquid, suppose this is a container and here a liquid is being kept. Now it is saying that in this stationary liquid, this liquid is not moving, it is stationary. The pressure is same at all points on the horizontal plane. Suppose I have taken any particular plane. Suppose I am talking about this plane in a liquid. So in this plane, any point if I select, any point, this point, or this point, any point on this horizontal plane, the pressure will be same. Now if I take another plane, say a plane below than the previous one. Now at this plane, if I take any point, suppose I'm showing by little circles. So at any particular horizontal plane,
I take any point, the pressure will be equal in all the points on a particular given horizontal plane. Obviously, there are two different planes over here in this diagram. So the plane which is below, whose depth is below, will have more pressure than the plane which is at lower depth. But if I consider a particular horizontal plane, then at any point on that particular horizontal plane, the pressure will be equal, will be same. I hope you are able to understand what I am saying. Okay, now point number 3. What does this say? Pressure is same in all directions about a point in a liquid. About a point in liquid. Now if I consider a point in a liquid, this is a container, some liquid is being filled. If I consider this point A inside a liquid, then pressure is same at all directions. Means upward direction pressure, sideward pressure, downward pressure, leftward, rightwards. In all directions, this point A is applying pressure, and the pressure is equal in all directions. So what this point says, pressure is same in all directions about a point in a liquid. I hope this is clear. Any given point, उसके चारों तरफ में वो equal pressure, हर दिशा में वो equal amount of pressure वो डालता है inside a liquid, if I consider any point. ठीक है, clear है? Now fourth point, pressure at same depth. Pressure at same depth. Keep on writing these points, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एग्जाम में कि राइट डाउन दी 2 laws or 3 laws of liquid pressure, then you have to write them. So pressure at same depth is different in different liquids. In different liquids. Now what it is saying, if I take two different liquids, suppose I take water over here and another container, identical container, and I take oil or say honey, not oil, say honey over here. Okay, so we know the density of honey is more than water, we know that. Now at any particular depth, say I am taking the depth of 3 centimeter from the free surface. I'm considering a point, let me show it by red color. I'm considering a point in red color. This point red is 3 centimeter below the free surface of water. Similarly, I'm considering a point in the honey also, which is also at a 3 centimeter depth. 3 centimeter depth. That means both of these points are at the same depth below the free surface. Only the liquids are different. But will these 2 points have equal amount of pressure? No. Different liquids है तो different amount of pressure होगा, even if the depth is same, even if H is same. तो ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था ना, प्रेशर लिक्विड प्रेशर इज इक्वल्स टू एच रो जी. तो ध्यान से देखो, सिर्फ H पे डिपेंड नहीं करता है. H इज द डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस. वो तो सेम होने से ही प्रेशर सेम होगा, ऐसी बात नहीं है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रो. रो इज वॉट? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. तो जिसमें ज़्यादा डेंसिटी होगा जिस लिक्विड में, उस लिक्विड में ज़्यादा प्रेशर होगा. इवन द डेप्थ्स आर सेम. इन बोथ केस आई हैव टेकन 3 सेंटीमीटर डेप्थ. हनी का डेंसिटी ज़्यादा, इसीलिए ये जो पॉइंट है इन द हनी, at that point pressure will be more. Therefore you can add one more point, that pressure in a liquid increases with the increase in density of liquid. तो density के बढ़ने के साथ साथ pressure भी बढ़ता है. And the fifth point and the last point says, a liquid seeks its own level. A liquid seeks its own level. A liquid seeks its own level का मतलब है, इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं. सपोज देयर इज अ कंटेनर इन दिस पर्टिकुलर शेप. द बॉटम ऑफ दीज कंटेनर्स आर कनेक्टेड. डिफरेंट शेप्ड कंटेनर्स आर देयर. द बॉटम्स ऑफ देम आर कनेक्टेड. आई एम trying to draw the diagram, right? You will be able to understand.
This is what a type of apparatus I have taken. Here you can see the first container has a different shape, the second container has a different shape, the third container has a different shape, the fourth container has a different shape, but their bottoms, in the bottoms they're all connected. Their water can flow from one container to another container through the bottom of these containers. Okay, now if I fill water only in one container, say this first container A, if I fill water only in the first container A, so obviously after 5 to 10 minutes what will I see? That the level in all the containers is same after some time. Initially I have filled water only in container A till here, but after some time I'll see that this water goes over here to this container also and to this container also after some time, say 3 or 4 minutes time, and then the level of water in all the containers may be same. Maybe क्या होगा ही same. सब कंटेनर में ये जो वाटर है वो इक्वली उसका लेवल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी डिफरेंट बिकॉज द वॉल्यूम इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंटेनर्स. सो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी देयर, डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी देयर इन डिफरेंट कंटेनर्स, बट द लेवल्स विल बी सेम, एग्जैक्टली सेम. सो व्हाट दिस पॉइंट सेज, अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल. उसने सेम लेवल ऑक्यूपाई करेगा वो हर एक कंटेनर में. दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड. अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल. फिर हम चाहे एक्स्ट्रा पानी इस कंटेनर में क्यों ना डाल दें, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि फिर सब में ही थोड़ा थोड़ा हाइट बढ़ जाएगा एंड ऑल दी हाइट्स विल बी अगेन सेम हाइट होगा. ऐसा नहीं कि किसी कंटेनर में ज़्यादा किसी कंटेनर में कम, ऐसा नहीं होगा. हाइट सेम रहेगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर अलग अलग होगा, बट हाइट ऑफ वाटर, लेवल ऑफ वाटर विल बी सेम. ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट्स जो हमने पढ़ा ये हो गया लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर. सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दिस टॉपिक, सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिक्विड प्रेशर. इस टॉपिक से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लाइक गिव रीजन वाई. तो एक बहुत कॉमन जो क्वेश्चन है वो है वाई द वॉल्स ऑफ अ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम. डैम का जो वॉल होता है, दीवार होता है, वो नीचे की तरफ ब्रॉडर क्यों होता है, मोटा क्यों होता है. इफ़ आई ड्रॉ द वॉल ऑफ अ डैम, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, द फ्रंट व्यू, द साइड व्यू रादर. This is the wall and here water is there. Now this is the wall. If you look at the wall is narrower towards the top but it is broader towards the bottom. ऐसा क्यों होता है? So इसका जो basic reason है, we know that pressure exerted by a liquid increases with its depth. जैसे जैसे हम डेप्थ बढ़ता है, नीचे जाते हैं हम, तो पानी का प्रेशर बढ़ता है. वी नो P इक्वल्स टू एच रो जी. ठीक है ना, एच रो जी. ये एच क्या है, ये डेप्थ फ्रॉम द फ्री सर्फेस है. ये डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा. देयरफॉर द रीजन इज दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इट्स डेप्थ. Thus, as depth increases, more and more pressure is exerted by the water on the wall. तो ज़्यादा प्रेशर exert करेगा. Now, to withstand such a great pressure at the bottom of the water, the wall of the dam is made with increasing thickness towards the base. ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है इसका रीज़न, किस तरह से क्वेश्चन आएगा और क्या आंसर लिखेंगे. बहुत सिंपल है, तो मैं इसका लिख नहीं रहा हूँ. आई जस्ट एक्सप्लेन इट, यू राइट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, एक सेकेंड जो क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक से वो है द डाइवर्स सूट. डाइवर्स सूट, व्हाट इज हु इज़ अ डाइवर? डाइवर मीन्स गोताखोर, जो पानी के नीचे डाइविंग करता है. उसका जो सूट होता है, दे आर मेड with a special protective material. Okay, and that material is such that it can withstand the high pressure of water under the deep water. Okay, I'm just reading it out what is written about divers suit in your book. The sea divers need special protective suit to wear because in deep sea the total pressure exerted on the diver's body is much more than his blood pressure. उसके अंदर का बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर होता है पानी के अंदर, द प्रेशर ड्यू टू द वाटर. तो फिर वो क्या करता है, टू विथस्टैंड दिस हाई प्रेशर ऑफ द वाटर, ही नीड्स टू वेयर अ स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट मेड फ्रॉम ग्लास reinforced plastic. What is the material? Glass reinforced plastic or cast aluminium. Now, in this type of suit, what happens? The pressure inside the suit is maintained at 1 atmosphere. तो नॉर्मली जब वो पानी के ऊपर रहता है उसका प्रेशर क्या रहता है उसके ऊपर, 1 atm 1 एटमॉस्फेयर रहता है.
और ये सूट जब वो पहन लेगा तो वो पानी के जितने भी नीचे क्यों ना चले जाए, उसमें इस तरह का मैकेनिज्म है कि उसका प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अराउंड हिज बॉडी ड्यू टू द सूट विल बी मेंटेन्ड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली। तो उसको वो हाई प्रेशर फील नहीं होता है पानी के वजह से। ही विल फील द नॉर्मल प्रेशर विच ही वुड फील ऑन द ग्राउंड, 1 atm प्रेशर ही उसे महसूस होता है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है डाइवर्स सूट से। एंड द थर्ड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन जो बनता है इस टॉपिक से वो है साइज ऑफ अ गैस बबल इन द वाटर। साइज ऑफ गैस बबल इन वाटर। नाउ व्हाट इज ओवर हियर, it is told, it is observed that the size of the gas bubble formed at the bottom of the lake rises as it grows in comes up। मान लो कि ये पानी का सतह है, दिस इज वाटर, एक छोटा सा बबल यहाँ पे बना, लेकिन ये बबल जैसे जैसे ऊपर आएगा टूवर्ड्स द टॉप, इसका साइज बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे इसका साइज बढ़ते जाएगा, ये बबल का साइज। तो वाई दिस हैपन्स, वी नो दैट the pressure of water is very high at the depth। तो वो हाई प्रेशर की वजह से ये बबल का जो साइज है वो क्या है, काफ़ी छोटा है। लेकिन जैसे जैसे ये बबल ऊपर आ रहा है, प्रेशर ड्यू टू वाटर डिक्रीजेज एंड द साइज ऑफ द बबल इंक्रीजेज। तो चलो मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ फ्रॉम द बुक। द रीजन इज दैट व्हेन द बबल इज एट द बॉटम ऑफ द लेक, द टोटल प्रेशर exerted on it is the sum of the atmospheric pressure and the pressure due to the water column। जब वो बॉटम ऑफ द सी पे है तो उस पर टोटल प्रेशर कितना है, ये एयर कॉलम जो हवा उसके ऊपर में है वो एयर कॉलम का प्रेशर, और ये जो वाटर है ये एयर कॉलम का प्रेशर और ये वाटर का प्रेशर, ये दोनों का प्रेशर का सम, दैट इज द टोटल प्रेशर ऑन दिस बबल एट पॉइंट ए when it is at the bottom of the sea। Now when it is coming up, when it is rising up, then what is happening, ड्यू टू द डिक्रीज इन डेप्थ द प्रेशर ड्यू टू द वाटर ऑल्सो डिक्रीजेज, प्रेशर डिक्रीज करता है। सो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बबल डिक्रीजेज, क्योंकि उसका वाटर लेवल, उसके ऊपर का वाटर का जो वाटर कॉलम है उसका हाइट डिक्रीज होने लगता है, एंड ग्रेजुअली द प्रेशर ऑल्सो ऑन दिस बबल डिक्रीजेज। एज ए रिजल्ट उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। हम जानते हैं बॉयल्स लॉ, अभी तक तुम लोगों ने शायद नहीं पढ़ा है बॉयल्स लॉ, क्लास 10 में पढ़ोगे। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजेज इफ देर इज अ डिक्रीज इन प्रेशर। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा अगर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये बबल ऊपर जा रहा है उसका प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, एज अ रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर दिस बबल इज ग्रोइंग इन साइज। दिस इज एज सिंपल एज दिस। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसको तुम अपने वर्ड्स में लिखना। अपने वर्ड्स में लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम रैंडमली कुछ भी लिखेंगे, इट शुड बी टू द पॉइंट। ओके, so I have explained what you have to write. Now we will look into a very important topic, that is Pascal's law. Yeah, Pascal's law. Let us read this law once. Pascal's law states that the pressure exerted anywhere in a confined liquid is transmitted equally and undiminished in all directions throughout the liquid. Pascal's law ये बोलता है कि प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड, कन्फाइंड लिक्विड का मतलब बंद लिक्विड, दिस लिक्विड इज क्लोज्ड फ्रॉम एवरीवेयर। वैसे एक लिक्विड में अगर हम कहीं पे भी प्रेशर लगाते हैं तो दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस थ्रू आउट द लिक्विड। तो वो जो प्रेशर मैंने लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर जो मैंने लगाया किसी भी कन्फाइंड लिक्विड में, वो प्रेशर इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड, अनडिमिनिश्ड मतलब उसमें बिल्कुल भी कम प्रेशर सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाता है, एग्जैक्टली जो प्रेशर मैं अप्लाई किया हूँ वही प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है और अनडिमिनिश्ड ट्रांसमिट होता है, कुछ भी वहाँ से माइनस नहीं हो जाता, अनडिमिनिश्ड ट्रांसमिट होता है। कहाँ ट्रांसमिट होता है, थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड में, इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में ट्रांसमिट होता है। इसको अगर हम एक्सपेरिमेंटली समझें तो कुछ इस तरह से हमें समझ में आएगा। यहाँ पैस्कल्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन, मैंने एक राउंड बॉटम इस तरह का एक apparatus ले लिया है और इसके अंदर हमने क्या किया कि लिक्विड भर दिया, ठीक है, और इसको ऊपर से हमने पिस्टन से इसको लॉक भी कर दिया कंप्लीटली। दिस पिस्टन कैन गो अप एंड गो डाउन, ये पिस्टन है, दिस कैन गो अप एंड गो डाउन।
लेकिन हमने इसको कंप्लीटली फिल कर दिया है और इसको कहीं पे भी ओपन नहीं छोड़ा है, तो दिस इज अ कन्फाइंड लिक्विड. नाउ इफ आई पुश दिस पिस्टन डाउन, इस पिस्टन को मैं नीचे पुश कर रहा हूं, दैट मीन्स आई एम अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर. तो दिस pressure will be equally transmitted in all the directions. Why and how? How we will observe this? Now, this apparatus looks something like this. There are pipes coming out from different heights. Okay. Now, initially, we know that liquid seeks its own level. Initially, the level of water in all the pipes was same before applying the pressure. जब मैंने ये पिस्टन से एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया, तब इन पाइप्स में लिक्विड का लेवल इक्वल था. अब जब मैंने प्रेशर लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, तो मैंने क्या देखा कि यहाँ से पानी का एक्सटर्नल जो प्रेशर की वजह से पानी निकलने लगेगा फ्रॉम दीज पाइप्स, एंड जेट्स ऑफ वाटर will come out. We will see that the height reached by all the jets will be equal. All the water coming out from all the jets will reach the same height. So this proves that the external pressure which I have applied in this confined liquid is equally transmitted and transmitted undiminished in all directions throughout the liquid. This is the experimental verification of Pascal's law. इसका एक एप्लीकेशन है जिसे हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ अ हाइड्रोलिक मशीन. ये हाइड्रोलिक मशीन किस तरह का मशीन होता है? जनरली इस तरह का मशीन को यूज़ करते हैं हम बहुत हैवी लोड को उठाने के लिए. जैसे मान लो एक कार है, कार को हमें लिफ्ट करना है, उठाना है, तो हम हाइड्रोलिक मशीन का यूज़ करते हैं. उसमें हम बहुत कम एफर्ट डालकर हम बहुत ज़्यादा भारी लोड को उठा सकते हैं. मीन्स द फोर्स विच आई एम सप्लाइंग to raise the machine or to raise the heavy load is very less. Effort is very less as compared to the load. That means it is a force multiplier. तो ये इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है? ये पैस्कल्स लॉ के अनुसार ये काम करता है. तो ये प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन एग्जाम में आता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. पहले इसको लिख लो, हेडिंग दो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन एंड राइट डाउन द प्रिंसिपल. देखो, द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन इज दैट अ स्मॉल फोर्स, मैं लिख रहा हूं, अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्मॉलर पिस्टन is transmitted to produce a large force on the bigger piston. पहले लिख लो, फिर मैं इसको समझाता हूँ. Now here if you see there are terms like smaller piston and bigger piston. ये smaller piston क्या है, bigger piston क्या है, इसको समझना पड़ेगा. Then only we will be able to understand principle of hydraulic machine. समझने से पहले इस डायग्राम को देखो, that will make it more clear. I am drawing a diagram of how the hydraulic machine actually looks like. Now here there are two containers. One is having a small area of cross section, and the another container is having a larger area of cross section. You can see this container A is having a smaller area of cross section. इसका जो ऊपर का सरफेस है उसका एरिया कम है as compared to this B container. इसका जो एरिया है, टॉप एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, काफ़ी बड़ा है. Okay, now but they are connected with this pipe. नीचे की तरफ दोनों ही कनेक्टेड है इस पाइप से. जरा मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से बनाना है. बुक में भी देख सकते हो, बुक में डायग्राम बना हुआ है. ओके, एंड दिस एंटायर कंटेनर्स अलॉन्ग विद दिस पाइप इज फिल्ड विद अ लिक्विड. दिस लिक्विड इज नोन एज हाइड्रोलिक फ्लूइड. तो हम एक्सपेरिमेंट के लिए हम वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो हाइड्रोलिक फ्लूइड्स होते हैं ना, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, वो वाटर नहीं होते हैं,
वो ऑयल होते हैं जनरली, और स्पेशल ऑयल्स होते हैं, उन्हें हम एज अ हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ करते हैं. बट वी कैन टेक एनी फ्लूइड फॉर द एग्जाम्पल. नाउ हियर वी हैव फिल्ड दिस लिक्विड कंप्लीटली एंड इट इज़ कन्फाइंड, हर तरफ से बंद है. नाउ हियर सपोज मैंने कुछ फोर्स लगाया, इनपुट फोर्स, कौन से कंटेनर पे? ए पे. मैंने वो है, दिस इज द पिस्टन ए, और ये कौन सा पिस्टन है? पिस्टन बी. तो मैंने पिस्टन ए पर इनपुट फोर्स लगाया, कितना लगाया? F1 लगाया. ठीक है. नाउ आफ्टर अप्लाइंग F1 फोर्स, दिस फोर्स इज अप्लाइड ऑन एरिया A1. मान लो ये जो A पिस्टन है उसका एरिया क्या है? A1 है, और ये जो B पिस्टन है उसका एरिया कितना है? A2 है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये A पिस्टन A का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, पिस्टन B का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है. I have applied an input force F1 on piston A, that means on area A1. That means force F1 is applied on an area A1. So some pressure is generated. चलो उस pressure को मैं क्या लिख लूँगा? P1. This P1 is the pressure which is external pressure which is exerted on piston A, जिसका area of cross section A1 है, by the force F1. तो pressure का क्या formula होता है? F1 by A1. This is the pressure on piston A. अब ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा थ्रू आउट दिस लिक्विड, थ्रू आउट दिस कॉन्फाइंड लिक्विड. ये प्रेशर तो पूरा ट्रांसमिट होगा, और यहाँ पे पिस्टन बी पे मुझे अपवर्ड फोर्स मिलेगा ड्यू टू दिस प्रेशर. तो यहाँ पे जो फोर्स मुझे मिलेगा उसका डायरेक्शन, जो F2 फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड्स होगा, क्योंकि F1 फोर्स को मैंने डाउनवर्ड्स डाला था जो ट्रांसमिट हो गया, और पिस्टन बी पर वो मिल रहा है मुझे इन द अपवर्ड डायरेक्शन. F2 इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. नाउ F2 फोर्स is applied on which area? What is the area of piston B? That is A2. So this is the pressure, we can say P2. This is the pressure on piston B whose area of cross section is A2, which is applied due to the force F2. ठीक है. So P1 और P2 हमें मिल गया. But what does Pascal's law say? देखो यहाँ पे Pascal law क्या बोलता है? अभी अभी हमने पढ़ा. Pascal law बोलता है कि the pressure exerted anywhere in a confined liquid is transmitted equally and undiminished in all directions. confined liquid में कहीं पे भी हम प्रेशर डालेंगे वो equally transmit होगा हर दिशा में. यानी दोनों प्रेशर P1 एंड P2 क्या है? इक्वल है, क्योंकि इक्वल ट्रांसमिशन होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर का. तो ये जो हमने अभी अभी किया, ये इससे ये क्लियर हो गया कि दिस P1 एंड दिस P2 शुड बी इक्वल. So now what we can write? By Pascal's law, P1 is equal to P2, no doubt. और इसी तरह से हम लिख सकते हैं P1 का वैल्यू क्या है? F1 by A1, और P2 का वैल्यू क्या है? F2 by A2. Both are equal. Okay. We know that A2 is more than A1. हमें दिख रहा है डायग्राम में, area of the second piston is more than the area of first piston. So this is very clear. So since A2 is more than A1, obviously mathematics से हमें क्या मिल जाएगा? Therefore F2 will be also more than F1, no doubt. इसका मतलब यही तो हमें आउटपुट चाहिए था कि जो आउटपुट फोर्स है, जो सेकेंड फोर्स जो मुझे मिल रहा है, दैट इज ग्रेटर दैन द इनपुट फोर्स. ये F2 है क्या? ये F2 है एफर्ट, सॉरी ये F2 है लोड जिसको मैंने उठाया, जो मुझे आउटपुट में मिला. और ये F1 क्या है? ये F1 है जो मैंने इनपुट फोर्स दिया, ये हमारा एफर्ट है. तो हमारा जो लोड है दैट इज मोर देन एफर्ट. दैट मीन्स हमने कम एफर्ट डाला और हमें ज़्यादा आउटपुट फोर्स मिला. तो यही तो है प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन. ये प्रूफ भी हमने कर लिया, F2 इज मोर देन F1. तो यहाँ पे अगर हमने देखो, हमने लिखा था प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन. अब इसको पढ़ते हैं, समझ में आएगा. अ स्मॉल फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्मॉलर पिस्टन इज ट्रांसमिटेड टू प्रोड्यूस अ लार्ज फोर्स ऑन द बिगर पिस्टन. तो स्मॉलर पिस्टन पे जो हमने स्मॉल फोर्स लगाया वो ट्रांसमिट हो जाता है टू प्रोड्यूस अ लार्ज फोर्स ऑन द बिगर पिस्टन. बड़े पिस्टन पर वो लार्ज फोर्स के रूप में ट्रांसमिट होता है. तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट को उठाना है तो हम उसको पिस्टन बी पे रख देंगे. सपोज कोई भारी कार है
और हम यहाँ कम F1 जो कम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे पिस्टन ए पर, स्मॉलर पिस्टन पर, लेकिन हमें जो F2 फोर्स मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स मिलेगा क्योंकि F2 विल बी ग्रेटर देन F1, और बहुत कम फोर्स डालकर ही हम उस भारी ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा वेट वाले कार को हम उठा सकते हैं ऊपर. तो इट इज़ यूज्ड फॉर लिफ्टिंग heavy objects. So this is a machine which acts as a force multiplier. Force multiplier क्यों? क्योंकि हमने फोर्स मल्टीप्लाई हो गया, हमने जो जितना फोर्स डाला था उससे ज़्यादा फोर्स हमें आउटपुट पे मिला. दैट इज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर. नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम ऑल्सो. एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन विथ योर डायग्राम. तो तुम्हें यह डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद तुम्हें ये लिखना है ज़रूर है कि यहाँ P1 क्या है, P2 क्या है, F1 क्या है, A1 क्या है, F2 क्या है, A2 क्या है. ये सिंबल्स का मीनिंग तुम्हें लिखना होगा, विच आई हैव नॉट रिटन राइट नाउ. यू हैव टू राइट दैट लेट piston A be the smaller piston whose cross-sectional area is A1, and piston B be the large piston or the bigger piston whose cross-sectional area is A2. Force F1 is applied on piston F1, which is transmitted to piston B as F2 force. इस तरह से लिखेंगे, जो भी चीज़ मैंने बताया उस तरह से ना, उसका बस सिंबल्स का क्या मीनिंग है लिखेंगे, एंड देन वी विल कीप ऑन राइटिंग दीज थिंग्स, एंड देन बाय पैस्कल्स लॉ हम ये जैसा मैंने किया वैसे करेंगे. फाइनली हमारा आ जाएगा F2 ग्रेटर देन F1. ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा ये फोर्स मल्टीप्लायर है. आज क्लास यहीं एंड करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.